So, welcome and good morning to the students. कल मैंने इसका कर्व गेट के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और उसके बाद टाइम काफ़ी होने के कारण मैंने वो लेक्चर जो है वो स्टॉप कर दिया था उस वक्त. बट आई वांट टू गिव, मेरे मन में एक दो थोड़े से इम्पोर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल थे, तो इसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर्स जो है, छोटा लेक्चर जो है सेपरेट लेक्चर इसका दूंगा. और आज एक दो न्यूमेरिकल इसके और करेंगे, दैट इज़ द कर्व गेट के, तो सो दैट कि आपका डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे. जो आपकी प्रॉब्लम है दिस परटेन्स टू द डैम, और दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू कैन से वेरी प्रोफेशनल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल. सो आई थॉट वी शुड डेफिनेटली डू इट. तो इसके लिए मैंने स्पेशल एक दो मैं प्रॉब्लम्स आज इसकी सॉल्व करूंगा रिगार्डिंग टू दिस. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? ए डैम हैज ए पैराबोलिक शेप. This is the dam. I have drawn the figure here. This is the dam, and this dam is having the parabolic shape. The equation of the curve, this is given because the curve is parabolic. Curve क्या है आपकी ये कर्व आपकी पैराबोलिक है. So equation of the curve that is given y is equal to y naught x upon x naught square as shown in the figure. Having x naught, this is equal to 6 meter. So this length from here to here, the pillar of the dam, you can say this is x naught, and its length is 6 meter, and y naught, this is the overall height of this, that is given by the y naught, that is 9 meter. The fluid is water. Compute the horizontal, vertical and resultant thrust exerted by water if the width, आप कह सकते हैं जहां पे दिया है इसने, if the length of the dam or the width of the dam is 1 unity. If the width कर दीजिए, if the width of dam is unity. So this is the problem. This is a very interesting problem. क्या है ये आपके पास डैम है, और ये डैम इस किस्म का कर्व डैम है आपका, और इसने वाटर जो है जहाँ पे रिटेन हो रहा है, जहाँ पे इसके साथ ये वाटर को क्या है जहाँ पे रिटेन हो रहा है, जहाँ पे अब जब ये वाटर जहाँ पे रिटेन होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, जैसे मैंने आपको कर्व सरफेस में बताया है कि जहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्ट करेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्ट करेगा, और यही हमें फाइंड आउट करना है. हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कंपोनेंट, एंड देन इट इज द रिजल्टेंट थ्रस्ट मींस फोर्स. सो एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ दिस, है ना. सो द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल बट वी विल मस्ट डू इट. सो यू कैन से सॉल्यूशन जहां से करते हैं हम सॉल्यूशन. So equation of the curve ये आपको दिया है. Equation of the curve, this is equal to y naught into x upon x naught whole square. So this is the equation of the curve. This is given here. And you know this is the equation of parabola because that is in raised to power 2. So this is the equation of parabola, or you can say the equation of the curve, right? So the value of this x naught and y naught is given to us. So you can say y is equal to, what is y naught here? That is 9 x, and x naught is 6 whole square, right? So you can say this is equal to r, this is equal to y is equal to 9, or this is x square into 36, right? So 9 and this is 4. Therefore
y is equal to x square. Yes, this is x square y 36 and y is equal to xy2, right? Y is equal to xy2, therefore x is equal to 2y, right? So up to this is clear to you. सॉरी, ये गलत हो गया मेरे से, गलत लिख दिया. सो ये आपका आ गया y is equal to x square upon 4, right? Therefore x square, this is equal to 4 into y, है ना, और x is equal to 2 root of y. ये वैल्यू आप कर लेंगे. x is equal to 2 root of y. So you can say x in terms of y, we have calculated x is equal to 2 root of y. Up to this point, this is clear. Yes. What is given there? We have got the equation of the curve of this dam, that is the parabolic in nature. So equation of the curve that is given, y is equal to y naught into x upon x dot whole square. Whereas in the figure, the value of x naught and y naught is given to us. तो जहां पे आप पुट करो और x की वैल्यू आप in terms of y you will calculate, right? So this is your the first part. Now we have to calculate. पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? x की वैल्यू आप कैलकुलेट करें, दैट इज 2 रूट y. इसको आप नोट करके लिख लें. सो फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल thrust. So horizontal thrust क्या था? What is the horizontal thrust? Means Fx, right? What is Fx? Projection of the curved area on the vertical plane, right? So projected area on the vertical plane, right? तो ये vertical plane आपका क्या है? What is the vertical plane here? OB. And if this is the curve, and if I will draw the projection of this curve, so this we will get this plane OB. We will get this plane because this plane, that is the vertical plane of the curve, right? So you can say that force exerted by the water on the projected area of the curved surface on the vertical plane. यही है ना? So ये क्या है? Force exerted by the water on the projected area of the curved surface on the vertical plane. So if we will draw the projection of the curve, you will get this vertical plane. तो आप कह सकते हैं means vertical plane क्या होगा? That is vertical plane OB. OB is the vertical plane. You understand this? So the area of this OB क्या आएगा? Area of vertical plane. What is the area of vertical plane? OB. So this is 9 meter, right? This is 9 into 1. The width of the gate is given as unity or 1 meter. So this is your 9 mm square. You understand this? So area you have calculated now, and you know what is the relation? Fx, this is equal to rho into g into a into h bar. This is the relation.
This is the relation to calculate the force. To calculate the force, here we are calculating the force in the horizontal direction, so I have written here as Fx. तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, तो h bar भी निकालना है. What is your h bar? H bar is the distance of the CG from the free surface of the water, right? Suppose if this length is, this height is 9 meter from the free surface of the water, so h bar is 9 by 2, means h by 2. This is equal to 4.5 meter. This is 4.5 meter. And now you calculate, now you substitute all the values here. So Fx is equal to, that is rho 1000, 9.81, that is 9, and this is 4.5. So you multiply this and find out the answer. What is the answer here? So this is 1000 into 9.81 into, sorry, 1000 9.81 into 9. This is 397,305 Newton. So this is 397,305 Newton. So this is your horizontal thrust. This we have calculated. So you know the way that how we have calculated this. The same procedure we have to adopt. In this same procedure we have to adopt. Means the horizontal force means क्या होगा कि जो ये आपका जो कर्व सरफेस है, इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा जो वर्टिकल प्लेन के ऊपर है ना, तो वहां पे फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू दैट, राइट. तो एरिया हम क्या लेंगे, दैट इज अ वर्टिकल प्लेन का जो एरिया होगा उस एरिया को हम कंसिडर करेंगे. तो फोर्स मींस रो जी ए एच बार, रेस्ट ऑल द वैल्यूज वी हैव कैलकुलेटेड, और एफ एक्स की वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज, this part is over, horizontal thrust. Now you come to this. Fx आपने कैलकुलेट कर लिया. Now you will calculate Fy. Fy, right? So this is the vertical component of the force, right? ये क्या है? Vertical component होगा force का, and Fy क्या होगा? What is that? Fy, weight of the water, weight of the water supported by the curved, weight of the water supported by the curved surface AOV, that is from the free surface, that is from the free surface of the water, that is from the free surface of the water, and from the surface of the water on the curve AO, right. तो ये हमारा जो Fy हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा फोर्स का, वो क्या होगा, वेट ऑफ द वाटर,
that is supported by this curve AO curve from the free surface of the water, ऊपर से लेके नीचे तक जितना पानी इसके बीच में होगा उस पानी का जो वेट इसके ऊपर एक्ट करेगा, वो जो आपका वेट होगा दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये जो पानी है आपका कर्व सरफेस के ऊपर, इस पानी का हमें क्या करना है, वेट को कैलकुलेट करना है, राइट। हमें क्या करना है, वेट को कैलकुलेट करना है। और यू कैन से रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ ए ओ बी। वेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि जैसे आपको पता है रो इंटू वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू मास, and mass into g this is equal to weight. So I have converted this equation like this, rho into g volume of AOB। तो इसका मतलब रो तो आपके पास है, g आपके पास है, but you have to calculate the volume of AOB। So इसका वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करने के लिए आप what you will do, आप क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए आप जहां पे, क्योंकि इस तरीके से इसका वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, तो आप क्या करेंगे, एक जहां पे कोई स्मॉल स्ट्रिप ले लेंगे, दिस इज योर स्मॉल, राइट, दिस इज योर स्मॉल स्ट्रिप, जो इसका थिकनेस है, दिस इज इक्वल टू so thickness of the strip, this is equal to dy and length आप इसकी कितनी ले ले, length of the strip आप ले ले x, this small strip you will take, right। So why taking the small strip, so volume of AOB, इसको मैं इस तरीके से भी आगे भी लिख सकता हूं ऐसे, तो वॉल्यूम ऑफ AOB इसको आप इस तरीके से भी लिख लो, रो इंटू जी इंटू एरिया ऑफ AOB इंटू विड्थ और हाइट लेंथ जो भी है दैट इज 1, कितनी है, 1 दिया है। तो आप इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब इसका मतलब हमें एरिया, हमें AOB का हमें क्या चाहिए, वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ AOB एंड जस्ट सी दैट हाउ वी कैलकुलेट दिस। तो चलो इसको मिटा देते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ AOB, है ना। सो दोबारा इक्वेशन लिख लेंगे हम, so weight of the water supported by the area AOB, supported by the water supported by AOV, right? So this is equal to rho G into volume of AOV into width of dam, that is 1, है ना, लिख लेते हैं जी, width of dam, right? अब देखिए इसको हम देखिए, अब क्या है कि हमें सॉरी नॉट विड्थ ऑफ वॉल्यूम ऑफ AOV, सो दिस इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो, रो जी इंटू एरिया
ऑफ AOB into width of dam, राइट। अब देखिए, नाउ यू कम टू द प्रॉब्लम। अब एरिया हमें AOB का निकालना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि पूरा इसका एरिया, तो हमारे पास कोई ऐसा अभी प्रैक्टिकल फॉर्मूला तो कोई नहीं है कि मैं इसका पूरा एरिया, इस एरिया का कोई हमारे पास कोई इक्वेशन है कर्व की या कुछ मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, वी विल जस्ट टेक ए स्टेप, वी हैव टेकन ए वेरी स्मॉल स्टेप हियर। तो जिसकी लेंथ जो स्ट्रिप की क्या है, x है, और जो थिकनेस है इसकी, जब विड्थ है उसकी कितनी है, 22 है। तो मैं ये जहां पे लिखूं, अगर एरिया ऑफ द स्ट्रिप इज इक्वल टू x इंटू dy, कोई प्रॉब्लम? एरिया हमारा स्ट्रिप क्या आ गया, आई विल से दैट दिस एरिया जो भी है, that is made up of this very very small strip, and if I will integrate this strip, if I will integrate all these small strips, or you can say if I will sum up all the small strip, so it means that will give you the complete area of AOB। तो हमें जो कंप्लीट एरिया AOB का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो हमने स्ट्रिप जहां पे जो ली है उसका एरिया मैंने निकाला, दैट इज x इंटू वाई, एंड नाउ आई विल इंटीग्रेट दिस। सो यू कैन से फॉर एरिया AOB निकालने के लिए क्या करेंगे हम, दिस इज स्ट्रिप इंटीग्रेशन x इंटू डी वाई, एंड दिस इज इंटीग्रेशन कहां से आएगी, दिस इज 0, राइट, this is 0 and this point is 9, so integration is 0 to 9, this point is clear, lower limit is 0 and the maximum limit is 9, 0 to 9 x into dy। अब देखिए हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, but we have calculated the value of this, x is equal to 2 root y, right, so we have calculated the value of x की वैल्यू मैंने निकाली थी 2 रूट बाई, जब मैंने ये इक्वेशन को सॉल्व किया था, ये जो पैराबोलिक इक्वेशंस थी, तो इसमें मैंने x की वैल्यू निकाली 2 रूट बाई। तो अब ये वैल्यू आप क्या करें, x की जगह 2 रूट बाई जहां पे क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये आ जाएगा 0 to 9, राइट। x की जगह हम लिखेंगे 2 रूट बाई into dy, right, 2 root by into dy, and this is equal to, इंटीग्रेशन को खत्म कर देते हैं, 2 को बाहर लिखते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन रूट बाई का क्या आएगा, बाई रेज टू पावर 3/2, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, राइट, बाई 3/2 अपॉन 3/2, this is the integration, sorry, by raised to power 3/2, और ये आपका था 0 to 9, right, so your this is आप कह सकते हैं 2 into that is y 3/2 upon 3/2 इसे इस तरीके से लिख लो, इसकी सभी की वैल्यू लिख दो आप, इसको लिख लो 1009.81 into, so you are this into this 4/3
into 9 3y2 into 9, right? So this is next one, just see here. And this is width of the dam is 1. तो ये कर लीजिए आप, अगर मैं ऐसे लिखूं 1009.81 इंटू 4/3 इंटू ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 27, राइट? सो कैलकुलेट दिस 27, 3 को इसके साथ काट दो, टोटल कितना आएगा? 1009.81 it'll be 4, it'll be 9, 353160. So this is equal to 353160 Newton. So this is the vertical force, right? This is your what? That is the Fy. You understand this? You understand this problem? Means जो आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स था उसके लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए तो वो हमें जो ही हमारा जो फर्स्ट प्रोसीजर था जो हमने पहले क्वेश्चंस में किया था, आप उसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? Fx इज इक्वल टू रो जी ए एच बार. तो एरिया आपने वर्टिकल प्लेन का लिया, क्योंकि कर्व सरफेस का प्रोजेक्टेड एरिया क्या था, वर्टिकल प्लेन था, तो हम किसका एरिया लेंगे? प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व सरफेस. तो वो क्या है? वर्टिकल प्लेन है. तो ए हमने वर्टिकल प्लेन का जो एरिया था दैट वी हैव कैलकुलेटेड, एंड एच बार यू नो दिस इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 2, दैट इज एच बार. तो जो फर्स्ट केस था हमारा Fx का, दैट इज सेम टू सेम एज वी हैव ऑलरेडी डन in our previous problems. But now when we have to calculate the Fy, there is only bit you can say change of mathematical calculation. जहां पे थोड़ा सा मैथमेटिकल जो सिस्टम था, कैलकुलेशन था, वो उसमें चेंज हुआ है. रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. उसमें कैसे चेंज हुआ है? क्योंकि ये जो आपका एरिया था, ये जो पैराबोलिक कर्व का एरिया था, और इसके बीच में जो वॉल्यूम जो ये बनाएगा, इसके बीच में जो पानी था, तो इसका हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए, बेसिकली हमें जो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए तो हमारे पास कोई सीधा इक्वेशंस नहीं था. तो इस केस में मैंने क्या किया कि जब भी आपके पास ये इस किस्म का पैराबोलिक शेप हो एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया, व्हाट यू विल डू, आप एक स्मॉल स्ट्रिप वहां पे अज्यूम कर लें कि यू अज्यूम ए स्मॉल स्ट्रिप दिया, तो जिसका लेंथ भी है और उसकी थिकनेस इज गिवन टू यू, एंड देन यू इंटीग्रेट द स्मॉल स्ट्रिप विद द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और जो उसकी लिमिट होगी दैट इज द लिमिट फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू. उस लिमिट में आप क्या करेंगे, जिस लिमिट में आपका जो पैराबोला जो है, पैराबोलिक जो शेप होगी कर्व की, वो जो ड्रा होगी, जो उसकी लोअर लिमिट होगी और जो उसकी हाई लिमिट होगी, वो वैल्यू से आप उसको क्या करें, इंटीग्रेट करें. एंड आफ्टर इंटीग्रेटिंग दैट, राइट, और इसमें एक चीज और अपने करना है, क्योंकि जो आपकी आपने जो स्ट्रिप लिया इसकी वैल्यू अपने इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई ली थी, तो हमने ये जो इक्वेशन ऑफ द कर्व हमें जो पहले दी थी पैराबोला कर्व की इक्वेशन, उसमें मैंने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आई हैव कैलकुलेटेड, राइट? तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आई हैव कैलकुलेटेड, एंड यू सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू हियर, एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग you just do the mathematical calculation, rest everything is same. So there is nothing much more here. So this is I think fx and fy you have calculated. तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स आपने निकालना है, तो रिजल्टेंट फोर्स जैसे मैंने आपको बताया था, रिजल्टेंट फोर्स आर द नेट फोर्स, वो आप कैलकुलेट कर ले. सो द टोटल फोर्स F, सो F फोर्स क्या होगी, दिस इज इक्वल टू F x स्क्वायर प्लस F y स्क्वायर, राइट?
एफ वाई स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स? हमने अभी कैलकुलेट किया था, मुझे बताइए एफ एक्स और एफ वाई की दोनों वैल्यू, यू टेल मी, आप मुझे बता दीजिए। So fx is your 397,305 39730, fx is, चेक कर लो आप, 39730 and fy, what is your fy tell me, 35, how much it's there? Fy is your, we have calculated 35160, right? Fy is 35 Newton, 35160 Newton. So substitute these values there. F is equal to, और कैलकुलेट कर लीजिए आप, 39730 होल स्क्वायर प्लस 35160 होल स्क्वायर, राइट? कैलकुलेट करो, दिस इज योर नेट फोर्स, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रॉब्लम। अब एक प्रॉब्लम और हम करेंगे ये, ठीक? तो अगर इसी में आपने एंगल निकालना होगा तो वो भी मैंने जैसे आपको बताया था, एंगल क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स, राइट? तो एफ वाई और एफ एक्स की वैल्यू निकालो, tan थीटा मिलेगा और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो ये कल मैंने ऑलरेडी प्रॉब्लम करवाई है, तो ये आपका ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट वन मोर प्रॉब्लम वी विल डू लाइक दिस। एक ऐसी ही प्रॉब्लम एक और करेंगे प्रैक्टिस के लिए, और फिर हमारे कर्व सरफेस की मैंने आपको 4 प्रॉब्लम्स दी है, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है? एक प्रॉब्लम और करके देन वी विल गो टू द अनदर लेक्चर, राइट? तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं भी नोट करता हूं। सो दिस इज योर न्यूमेरिकल नंबर 2, ऑलमोस्ट सेम वन हियर, एक जैसा ही है, देयर इज नॉट मच डिफरेंस देयर। सिर्फ ये मैं एक प्रॉब्लम और करवाना चाहता था आपको एक प्रैक्टिस के लिए, सो दैट के जो आपका कंसेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाए, राइट? तो इस इक्वेशन में क्या था कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द resultant of the force, resultant of the, you can say find the magnitude and direction of the resultant force acting on the curved surface. ये जो curved surface acting on the curved surface of the dam, and the relation of this, the shape of the curved surface, that is given by the relation, that is y is equal to x square by 9. This is the equation of the curve, that is the parabolic curve. This is given by this equation, or you can say that the shape of the curved surface, that is given by this equation, x square by 9, or you can say that the height of the water from the free surface to the, you can say the total depth of the water is here 10 meter, right? तो water from the free surface से water का depth कितना है, that is 10 meter, and the width of the gate is taken as, width of the dam is taken as 1 meter, right? This is actually same type of problem, and same way, same procedure we have to follow, but only to practice this one more problem I have taken here. और इसमें अगर आपका कोई कंसेप्ट पीछे क्लियर ना हुआ हो तो आप इसको एक ध्यान से देखिए और अपना कंसेप्ट जो है क्लियर कर लीजिए, राइट? तो ये इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया है, तो जो मैं फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें, हमारा जो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है, जो इक्वेशन ऑफ द कर्व होगा उसमें आप x की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ y। तो यू कैन से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 9, और यू कैन से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y, राइट?
x square is equal to 9y. Therefore, x is equal to 3 root y. So this is the value of x in terms of y we have calculated. अब हमें इसमें h दिया है, हाइट जो आपको दिया है, डेप्थ ये भी दिया है आपका कितना है, 10 मीटर है, डेप्थ इज 10 मीटर एंड width of the dam this is given as 1 meter, right? Width of the dam is given as 1 meter. तो फर्स्ट हमें क्या आंसर निकालना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट fx. तो fx का जैसे मैंने आपको बताया कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका होगा वो क्या होगा, द प्रोजेक्शन ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑन द वर्टिकल प्लेन. अगर हम इसका कर्व्ड सरफेस का द फोर्स एक्टिंग ऑन द कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना, और यू कैन से द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्शन, force acting on the curved surface, force of the water acting on the curved surface is equal to the projected area of the curved surface on the vertical plane. ये तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, तो इसमें सीधा फार्मूला लिखेंगे fx इक्वल टू रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार, राइट. fx निकालने के लिए यही फार्मूला लिखा था हमने. अब इसमें हमें दो चीजें चाहिए, एक तो a चाहिए, एक एच बार चाहिए. तो a क्या होगा, यहाँ पे एरिया क्या होगा, दिस इज योर वर्टिकल प्लेन, दिस इज योर वर्टिकल प्लेन. जो कर्व सरफेस का वर्टिकल प्रोजेक्शन है, एरिया है कर्व सरफेस का, वो j बनता है, दैट इज द वर्टिकल प्लेन, ये बनता है. इसका हाइट जहां से लेकर जहां तक कितना है, 10 मीटर है. तो अगर इसका हाइट 10 मीटर है और विड्थ आपको दिया है 1 मीटर, तो एरिया आपका क्या बनेगा इसका वर्टिकल प्लेन का, 10 मीटर स्क्वायर, राइट, 10 मीटर स्क्वायर. तो एच बार भी आप कैलकुलेट कर लें. एच बार द टोटल डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर टू द ग्राउंड लेवल कितना है, दैट इज ये होता है आपका h by 2, दिस इज 10 by 2, दिस इज योर 5 मीटर. तो जहां तक ये सारी चीजें क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर. इसमें हमें एक तो वर्टिकल प्लेन जो होगा उसका एरिया कैलकुलेट करना है और दूसरा हमें एच बार कैलकुलेट करना है. तो एच बार के लिए जो टोटल डेप्थ होगा, टोटल डेप्थ डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर एच बार. तो ये आपका 5 मीटर आ गया. तो अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर लीजिए आप, एफ एक्स दिस इज इक्वल टू 1009.81 10 into 5. This is equal to 1009.81 into 10 into 5, 490500. So this is equal to 490500 न्यूटन, राइट. तो एफ एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली. अब आइए आप एफ वाई के ऊपर. सो हमने एफ वाई की वैल्यू निकालनी है. तो एफ वाई क्या होगा इसमें, एफ वाई मैंने बताया था कि वेट ऑफ द वाटर विच इज सपोर्टेड बाय दिस कर्व, राइट, विच इज सपोर्टेड बाय दिस कर्व फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर. कितना वेट वाटर का ये कर्व जो है सपोर्ट करता है, वो वेट हमें कैलकुलेट करना है. और वो जो वेट होगा दैट इज योर वर्टिकल फोर्स होगी, एफ वाई. अब देखिए जे एरिया है, दिस इज योर एरिया, राइट, दिस इज योर एरिया जो हमने, जिसका वेट हमें कैलकुलेट करना है, राइट. हमें क्या करना है, तो इसमें आप लिख सकते हैं रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा, वीसी, राइट, वॉल्यूम ऑफ वीसी, राइट. तो इसमें देख लीजिए आप, वॉल्यूम क्या होगा, रो इंटू जी इंटू एरिया
कंटेन्ड इन द कर्व ABC आप पूरा कह सकते हैं, राइट। तो ABC लिख लीजिए। तो एरिया ABC, राइट। तो इसमें क्या करेंगे आप, आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए भी क्या करेंगे आप, एक स्ट्रिप ले लेंगे, स्मॉल स्ट्रिप। यू विल टेक स्मॉल स्ट्रिप हियर। आप कोई एक स्मॉल स्ट्रिप ले लीजिए। ये स्मॉल स्ट्रिप है, दिस इज योर स्मॉल स्ट्रिप, राइट। स्मॉल स्ट्रिप की जो लेंथ है जहां पे, वो कितनी है, x है, और जो जहां पे जो डिस्टेंस है आपका, दिस इज योर dy, राइट। सो आपने ना एरिया लिया, स्ट्रिप लिया x dy, राइट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 1 भी तो लिखिए आप, राइट। यस, वॉल्यूम एंड यस। सो दिस इज इक्वल टू 1009.81। मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन 0 to 10। देखिए मिनिमम क्या है, 0 है, मैक्सिमम क्या है, 10 है। 0 to 10, 0 to 10, that is, what is the value? Yes. So x into dy into 1. So this is equal to 1009.1। पुट कर लीजिए 0 to 10। What is your x? x की वैल्यू थी आपकी 3 into root by dy into 1, राइट। जहां तक क्लियर है। सो देयरफॉर जहां पे मैं जहां से कंटिन्यू करूंगा, fy किसके बराबर आ जाएगा आपका, 1009.81। 3 आप बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है। रूट y का क्या इंटीग्रेशन होगा, दिस इज y रेज़ टू पावर 3/2, 0 to 10, राइट। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए लिमिट को। तो लिमिट आपका आ गया 1009.81 इंटू 3 बाई की जगह क्या पुट करेंगे, 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3/2। जहां पर भी तो 3/2 जहां पर भी आएगा। सो दिस इज 3/2, राइट। 2 ऊपर चला जाएगा, 3 और 3 ये कैंसिल हो जाएगा यहां से। सो fy दिस इज इक्वल टू 1009.81 into 2 into 10 raised to 3/2 से कैलकुलेट करो। टेल मी व्हाट इज इट्स कैलकुलेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। So this is equal to 620,439 न्यूटन, राइट। तो fx और fy की हमारे पास वैल्यू आ गई। fx की नोट कर लो ये कहीं, क्योंकि ये बाद में एक्चुअली पता नहीं चलता। तो आपके पास दिस इज क्लियर, यू हैव कैलकुलेटेड द horizontal component of the force and the vertical component of the force। और उसके बाद आपने क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो इसको मिटा देते हैं, मैं जहां पे नोट कर लेता हूं इसकी वैल्यूज। तो fx आपकी जो वैल्यू आई थी, व्हाट इज fx दिस इज इक्वल टू 490500 न्यूटन एंड fy
620,439 न्यूटन, राइट। इसको आप इधर लिख लीजिए आप। Now the resultant force, now a resultant force F, this is equal to Fx square plus Fy square, right। तो वैल्यू पुट करो इनकी, 490,500 होल स्क्वायर प्लस 620,439 whole square and find out this is how much. So this is 790,907 न्यूटन। ये चेक कर लीजिएगा कि मैंने कैलकुलेशन ठीक किया। सर दिस इज योर रिजल्टेंट फोर्स। और अगर मैं आपको इसका डायरेक्शन कहूं तो डायरेक्शन करने के लिए क्या करते हैं हम, tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा Fy अपॉन Fx। दिस इज इक्वल टू व्हाट इज योर Fy, 620,439 डिवाइडेड बाई 490,500। करो कितना आया है, so this is 1.265, 1.265, therefore theta is equal to tan inverse 1.265। करिए कितना है, so this is equal to 51 degree। so this is the direction, so this is the direction of the force। so I think the concept of these problems are very much clear to you। I have taken lot of problems here because this is a very interesting topic। so I think this is very interesting for each and every person, whether they are students or whether they are the professionals, they are working somewhere in department। so I have taken the more problems here so that you can understand its concept in a very good manner। तो आज जो मेरा लेक्चर जो था, जो मैं कल शुरू किया था, तो उसमें मेरे मन में ये था कि मैं एक दो और प्रॉब्लम करवाना चाहता था, बट इट वाज वेरी लेंथी एट दैट टाइम। तो मैंने ये दो प्रॉब्लम्स जो हैं आपको इसका दिया है, कर्व सरफेस का, एंड दीज टू प्रॉब्लम्स आर पर्टिकुलरली आई हैव टेकन फ्रॉम द डैम का जो आपका शेप होता है, जो डैम का जो कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें जब हम वाटर को रिटेन करते हैं तो किस तरीके से वाटर की फोर्सेस एक्ट करती हैं कर्व सरफेस के ऊपर, और कैसे हम उन फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं, किस डायरेक्शंस पे वो एक्ट करती हैं, उसका नेट रिजल्टेंट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आज आपका ये टॉपिक जो था बड़ा क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक टुमारो आई विल टेक अप। सो थैंक यू वेरी मच।